Welcome to Mathsci Educator's YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. Welcome to Mathsci Educator. Today we are going to learn about our 12th standard biology and our chapter number 12, that is about the biotechnology and its application. In this chapter we are going to learn the biotechnological application in agriculture, biotechnological application in medicine, for the production of transgenic animals and their related ethical issues. As a biotechnology, as you learned in our previous chapter, that are essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using a genetically modified microbes, fungi, plant and animals. As you all learn about all these things in our previous chapter, that is our chapter number 11. Okay, now in this chapter we are going to learn about a biotechnological applications. जो भी हमने बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, जो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा है, हाउ दे आर यूज्ड इन अ मार्केट, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एंड हाउ वी गेट देयर यूजफुल प्रोडक्ट and which type of the product right now available in the market. All that things are understood in this chapter. So their biotechnological application that include the four main parts, that is their use in agriculture, their use in environmental side, their use in healthcare and also इन इंडस्ट्रियल स्केल. मतलब ये अलग अलग जगह है जहाँ पे हम उसका यूज कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हो सकती है, हम वहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड की कि कैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में यूजफुल है, तो दे आर यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स. मतलब कि अगर हम उसकी जो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सो दे आर यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स. दे आर यूज्ड फॉर द माइक्रो प्रोपोगेशन एंड दे आर आल्सो यूज्ड to create a genetically modified plants and to produce their hybrids. हम इसके बारे में डिटेल में हमारे इस चैप्टर में बात करेंगे. Another that is about the biotechnological application in a healthcare. They are used for a tissue specific delivery method for a proper treatment. हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके लिए. For the production of stem cells, to produce monoclonal antibodies and most important to produce a recombinant DNA products along with the vaccines and diagnostic kits, जिसके बारे में भी हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें कि इंडस्ट्रीज में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस उसका यूजफुल है, सो दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. दे आर एज एन बायोकैटलिस्ट कि जो डिफरेंट रिएक्शंस को फास्ट करवाता है, एंड दे आर आल्सो यूजफुल टू द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट रिएक्शन दैट अल्टीमेटली गिव्स टू अ बेटर प्रोडक्ट. फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट, देयर फूड, बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स, जैसे कि हम बायो रिएक्टर्स की हमने जो बात की थी, दे आर आल्सो एज एन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में होता है. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी एंड बायोफ्यूल and also for the bio mining. और अगर हम एनवायरमेंटल के थ्रू देखें कि इन एनवायरमेंट हाउ दिस बायोटेक आर यूजफुल, सो दे आर यूज्ड फॉर द सॉइल एंड वाटर रिमीडिएशन, फॉर देयर प्योरिफिकेशन एंड बायो सेफ्टी एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की जो सेफ्टी है, उसके जो कंट्रोल्स है, उसके जो क्राइटेरियाज है, उसको भी हम एज एन एनवायरमेंटल थ्रू हम देख सकते हैं कि आइदर दे आर यूजफुल और नॉट. सो इन सच हम बात कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इट्स एन वास्ट एरिया एंड वी यूज देयर एप्लीकेशन इन द डिफरेंट फील्ड लाइक इन एग्रीकल्चर, in healthcare, in environment and also into the industries. So they include a very vast area.
There are mainly three critical research right now in the area of biotechnology, and the three critical areas are include: first, that provide the best catalyst in the form of improved organism that are usually a microbes or a pure एंजाइम. जो हमने इंडस्ट्रियल फील्ड में हम जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि दे आर प्रोवाइडिंग अ बेस्ट कैटालिस्ट, कि जो कैटालिस्ट मतलब कि यहाँ पे एंजाइम की बात हो रही है. दे मे बी आइदर फ्रॉम इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब हमने जो मॉडिफाइड किए हैं ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू भी हो सकता है, या तो फिर वी विल एक्चुअली प्रोड्यूस द प्योर फॉर्म ऑफ दैट एंजाइम. Okay, so that is the first criteria, first research area. Second one, to creating a optimal condition through engineering for a catalyst to act. जो catalyst हमें produce करवाना है, okay, for that we have to create a optimum condition in which condition they are able to give the better result through engineering for a catalyst to act, जिसके थ्रू वो कैटालिस्ट एक्ट हो सकता है. एंड लास्ट वन, दैट इज अबाउट द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरिफाई दैट प्रोटीन्स or organic compound, because that also create a most impact on that product. Okay, that purification product, that isolation process, purification process, they are also most important for giving a best result. They are depend on that particular purification process. They are included into the downstream processing. So over here, three critical areas are there. First one, to providing a best catalyst, to create an optimum condition in which that catalyst act, and lastly, there is a downstream processing. So first of all, we talk regarding our biotechnological application in एग्रीकल्चर. हमने जो हमारे जो क्राइटेरियाज देखे थे उसके रिगार्डिंग हम बात करें. दे आर द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर फील्ड. दिस three options that can be thought for increasing food production. उसके लिए हमें तीन क्राइटेरिया, उसके जो ऑप्शंस हैं वो देखने पड़ते हैं. फर्स्ट वन, दैट इज द एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. हम कौन सा फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है एग्रो केमिकल बेस्ड, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में हम केमिकल का यूज करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. ओके. सेकेंड क्राइटेरिया, दैट इज द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसके बारे में आपने सुना ही है, आप बहुत बार सुनते हैं रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक फूड, रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. Okay, so that is the another option for getting that used for increasing the food production, that is the organic agriculture. And the last one, that is the most important, it's an genetically engineered crop based एग्रीकल्चर. मतलब कि एग्रीकल्चर में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उसको यूज कर सकते हैं. देयर आर बेस्ड फॉर द प्रोडक्शन और गिव द इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन. सो दीज आर द थ्री मेन ऑप्शन. फर्स्ट वन, दैट इज द एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. Second one, it's about the organic agriculture, and the last one that are based on our biotechnological applications. It's an about genetically engineered crops. Now, we talk regarding something about the green revolution. Okay, that already you heard in your previous standards regarding the green revolution, in which they are successfully increased the food production many folds, many times by using a better management practice and use of agrochemicals, fertilizers and pesticides. जब green revolution हुआ था, in that era, in that period, they are highly used agrochemicals, their fertilizers and pesticides. तो उससे क्या होता है कि they are increased their food production many times. Okay, and further increase in the production is not possible by using this method. To overcome this genetically modified crop is used, because as you know, these chemicals, these fertilizers and pesticides, they are directly indirectly harmful to the organism. They are remain in the soil, also they are harmful for the texture of the soil. ओके, और उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी वो प्रोडक्टिविटी भी कम होती गई है. सो हाउ टू ओवरकम ऑल दिस पॉसिबिलिटीज? बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. However,
for farmers in developing world, agrochemical are often too expensive. वो बहुत ही expensive होता है and they are further increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding. So is there any way to minimize the use of these fertilizers and chemicals so that their harmful effect on the environment are reduced? Okay, so their option is, or their answer, that is the use of genetically modified crops is a possible solution. Now what is genetically modified organism? हम उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं that what is the genetically modified organisms. Either may be plant और हम animals की भी बात कर सकते हैं. Okay, so there are plant, bacteria, fungi and animals whose gene have been altered या तो फिर have been changed by manipulation. That is known as an genetically modified organisms. ऐसे organisms के जिसका जो natural gene है उसको थोड़ा बहुत alter कर दिया है या तो फिर change कर दिया है. They are known as an genetically modified organisms. They are shortly known as GMO, in which GM plants मतलब कि genetically modified plants have been useful in many ways. Okay, how they are useful? Because their first probability it's made the crops more tolerant to abiotic stress. Okay, कई बार क्या होता है कि ज्यादा सूखा पड़ने से, ज्यादा ठंडी होने के वजह से या तो फिर सॉइल जो है उसमें सैलिनिटी होने के वजह से वो क्रॉप्स वहां पे ज्यादातर ग्रो नहीं हो पाते. ओके, सो वी हैव टू मॉडिफाई दैट क्रॉप्स in such a way that they are able to tolerate such type of the abiotic stress like an cold, drought, salt and heat. हम इस सबको modify कर सकते हैं. हम इस तरह के प्लांट ग्रो करवा सकते हैं कि वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं. ओके, सेकेंड वन दैट इज द रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स. जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करके we are going to produce pest resistance crop. हम ऐसे ही क्रॉप बना ले कि जो अल्टीमेटली पेस्ट को रेजिस्ट करे, जिसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स का यूज ना करना पड़े. ओके, दे आर ऑल्सो हेल्प्ड टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस हो रहे हैं वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा निकल के आए. And these genetically modified plants are also used to increase their efficiency to mineral use by plants. Means that prevents the early exhaustion of fertility of the soil. उसकी efficiency को increase करना है, so easily वो minerals को absorb कर सकते हैं. And also we are producing to enhance the nutritional value, plants nutritional value, for example vitamin A enriched rice. हम इस तरीके के राइस बना सकते हैं कि जिस बनाए हुए हैं कि जिसमें विटामिन ए का अमाउंट ज्यादा है, तो वी आर एबल टू प्रोड्यूस देयर हाईली न्यूट्रिश वैल्यू ऑफ फूड. ओके, इस तरह के प्लांट के जिसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है. सो दिस इज ऑल अबाउट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म and what are they useful, that why we should modify that organism, why we should modify the plant. Okay, so there are 5 possibilities useful of this genetically modified organism: to improve abiotic stress, to reduce the chemical pesticides that help to reduce the post harvest losses and increase their efficiencies for the absorption of minerals and their enhance the nutritional value. So students, I hope आपको आज के इस वीडियो में समझ में आया होगा. उसके नेक्स्ट डिटेल के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you and take care. So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Mathsci Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.